with the time limit that we have. So how are we going to know what all needs to be prepared, what kind of topic we need to highlight more, focus on more from the syllabus which we have? Definitely, it is not possible to do 100% of the syllabus and go. Because what happens is, even that in many questions there is a or element written in the question where uh, you have to choose between the topic. या तो ये करो या तो वो करो. So definitely there is a major highlighting areas which the UPSC focuses year by year. Now that is going to come after analyzing previous year papers, their trends and various insights. So question patterns आप देखिए, understand the question pattern which has come for the last 5 years, and then you understand what are the topic, list out the topic which comes more often, what are the areas they ask. So prioritize those in your study plan as the first and foremost topic to be completed. Then you see the difficulty levels, the way they write the question is written, question format, what are keywords, analyze, or what they say key critically analyze, crit- or they say elaborate, things like that. So you have to see that these words may change the meaning of the question altogether. So you can know from seeing the trend which are the topics I need to prioritize first and what kind of answer I'm going to write. Definitely question trend ke baad writing is the key that I mentioned previously as well. Writing is the key. Now, what are we writing? The entire story or the entire element that skill which is needed is to understand the demand of the question. Now, for example, you read the question and then you understand ये क्या पूछ रहा है. एक एग्जांपल देता हूँ. एक क्वेश्चन में अगर आता है इंडियन मॉनसून भी कीवर्ड है और इंडियन इकोनॉमी भी कीवर्ड है. The question, because you know about monsoon, you write the monsoon mechanism in where the question is about how Indian monsoon impacts Indian economy to become a $5 trillion economy. So where what all can you talk about the mechanism of the monsoon? Here you have to see what kind of contribution Indian economy and which kind of industries monsoons matter and how much they contribute to the economy. Moreover, if we want to have a $5 trillion economy, what kind of investment, what kind of readiness are required? The question is more on the economic aspect. So then if you know the demand of the question, then do you have the relevant knowledge? If you have the relevant knowledge, do you have the data to represent it? If you have the data, have you written in a flow, readable by paper checker? Now, what are the effective study strategies? Now that we know that these are certain priority areas, and I have to see that these are the most priority, and things to be doable. तो उसको आप plan करिए and put it all in your time, daily schedule time wise in a weekly basis calendar. Then you have to stick to your plan. See, how are you going to improve? अगर gaps नहीं दिखाई देंगे. So going to improve is to first definitely planning, planning, then stick to plan. अब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े गोल सेट कर लिए एंड देन यू आर नॉट एबल टू, पहले 2 ही दिन में ही खत्म हो गया, हवा टाइट होगी एंड देन यू डिमोटिवेट हो जाओगे. व्हाट इज नीडेड इज डूएबल प्लान एंड यू सी स्मॉल गोल्स कंप्लीट करने लायक. 1 घंटे में 40 पेज पढ़ लूंगा और उसके बाद 6 घंटे हो गए एक ही पेज पे अटके हुए, सेल्फ गिल्ट आ जाएगा. सो नीड टू अवॉइड ऑल दैट, टू अवॉइड सेल्फ गिल्ट. व्हाट यू नीड टू डू, स्मॉल गोल्स करो,
उसको करो, कंप्लीट करो, देन थोड़ी सी और इंक्रीज करो, फिर उसको कंप्लीट करो। तो यू नीड टू स्टिक टू योर प्लान जो आप बनाओ पहले से। तो पहले प्लान को क्या एक बार स्टिक करके हम चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको प्लान, एवरी प्लान में एक रिव्यू टाइम भी आप कर सकते हैं। वंस यू रिव्यू एवरी 3 days और 4 days, रिव्यू क्या करना चाहिए, कितना रह गया, कितना कवर अप करना है। सो लाइक दैट इफ यू आर एबल टू डू इट, दैट मेक्स योर गोल ओरिएंटेड अप्रोच, बिकॉज हमें पता है हमारा टाइम तो फिक्स्ड है, इसी टाइम में हमने करना है। एंड डेफिनेटली बिना इसके तो कुछ भी नहीं होने वाला। और कई लोग बोलते हैं कि मैंने पढ़ लिया, मैंने माइंड में देख लिया, हो गया। अगर आप एमसीक्यू करके आ रहे हैं, इफ यू हैव डन एमसीक्यूज, यू हैव जस्ट हैबिचुअल टू डू दिस थिंग। You have to write a sentence full. Writing is a skill in itself. 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख सकते हो? मीनिंगफुल सेंटेंस, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन यू पुट? So practice will make you achieve that. So you need to write, you need to write, you need to write, evaluate, again write, and improve. Now, this exam, you will see that all the years, trend wise, every topic which is there, syllabus wise, they mostly address the current affair news of that area which has happened. And current affair, not just what happened. One has to be, and one has to see that total analysis is understood. 5W to H. What, when, whom, why, where, how, and how much. तो ये एनालिसिस आपको हर एरिया में आपको करना चाहिए एज a नोट, and that is what will make you understand that what all data I need to put in, not just the incident which had happened in the current, but things around it, how it impacts, whom it impacts, all the इसी के notes आपको बनाने हैं during this period. One doesn't, ऑप्शनल सबका अलग अलग है, एंड उसका सिलेबस अलग अलग है, उसका डिमांड अलग अलग है। तो ऑप्शनल डेफिनेटली, ऑप्शनल जो है वो उसका जो रिसोर्स आप जहाँ से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वट एवर इज योर ऑप्शनल, you see that you are able to manage that in the 8 weeks of preparation which you have। उसमें आप बांट सकते हो, पेपर 1 सेक्शन है, पेपर 2 पेपर 1 सेक्शन B, पेपर 2 सेक्शन A, सेक्शन B, या उससे भी आप बाइफरकेट कर सकते हो, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अराउंड इट। तो अगेन इसमें भी आपको पेपर एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, and do the analysis. Or now coming to how do we maintain our motivation and stay focused. So basically, as I mentioned in the initial step की goal setting जो आपको करना है, you see achievable goals. अचीवेबल गोल्स उसको ब्रेक डाउन करिए, आप कर पाए ताकि आप मोटिवेटेड रहे। सेकंड, आप ब्रेक लीजिए, ऐसे खाली पढ़ने से बर्न आउट हो जाएगा, एंड योर एनर्जी लेवल्स आल्सो इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। यू टेक ब्रेक, एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, आजकल आपने बहुत सुना होगा, वेयर यू एक्चुअली वर्क फॉर 25 मिनट्स, एंड देन उसके बाद आप ब्रेक लेते हो 5 मिनट का, फिर उसको रिपीट करते हो 1-2 बार, और फिर धीरे धीरे ब्रेक ज़्यादा लेते हो, तो जो इफेक्टिव स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एंड यू कैन ट्राई ऑल दिस टेक्निक, बट ओवरऑल आपका जो गोल है, अचीव योर डेली गोल। And let me tell you, everybody will have their own speed.
सबका राइटिंग स्पीड, सबका राइटिंग हैंड राइटिंग, सबका अपना यूनिक है, उसी में ही करना है, देयर इज नो वन स्टैंडर्ड सेट। तो कोई ऐसा नहीं है, आप जब कम व्हेन यू डिस्कस इन द व्हेनेवर यू सिट टुगेदर और यू सी एनी अदर यूट्यूब और एनी अदर वीडियो रिसोर्स जहाँ पे कोई बोलता है, नहीं मेरा तो सब खत्म हो गया, आई कंप्लीटेड इट जस्ट बिफोर प्रीलिम्स ओनली, थिंग्स लाइक दैट, सी ऑल दैट इज फाइन, बट you cannot complete it before prelims and not relook it again. You have to do the relooking. You have to start writing. You have to write, evaluate, and get into the mode that whatever knowledge you possess, वो आपके fingers में आ गया हो कि आप सीधा लिखना शुरू करो. That kind of you have to attain that level of expertise. And then most important over here is seek guidance. As I mentioned, seek guidance from your mentors, experts, or people who can help you understand और जो आपको समझ में नहीं आ रही, कहाँ तकलीफ आ रही है आपकी जर्नी में, वो आपको वहाँ सॉल्यूशन दे सकते हैं, मे बी मोटिवेशनल, मे बी नॉलेज वाइज, बट इफ यू ओपन अप टू सम वन ऑफ द मेंटर एंड टेल योर थिंग्स, slowly you will realize that it is improving your own performance. आप अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम में ये तो गोल में आपको लिखना ही है कि आई एम गोइंग टू डू माय रिव्यू, सेल्फ रिव्यू विद मेंटर, रिव्यू विद सेल्फ, ये सारा आपको लिखना ही है इन द process calendar. And then whenever you progress and complete something, do celebrate a small celebration so that you also feel contented, because if you go in the exam ki mera hua nahi hai, I am yet to complete, you just अपना mindset आप change कर देते हो. बहुत बार बहुत सारे बच्चे मेंस इसीलिए नहीं क्वालिफाई करते इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग, द मोमेंट दे सी द एसे पेपर और दे सी द फर्स्ट पेपर, पेपर वन, दे रियलाइज कि इसमें तो ऐसा टफ हो गया या मेरी तो तैयारी ही नहीं हुई, अब तो अगले साल ही दूंगा. तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच को अगर आपको नहीं करना है, तो सी दैट एवरीथिंग व्हेन यू कंप्लीट एज पर योर प्लान, यू सेलिब्रेट इट सो दैट इट इज रजिस्टर्ड. नाउ कम्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दैट with your answer writing. This is a core way of looking at things. आप आंसर लिखते रहो, इवैल्यूएट करवाओ उसको, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई वेरियस गैप्स कि मैं कहाँ प्रूव कर पा रहा हूँ, कि मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, कि मैं आई एम नॉट एबल टू मेक द वर्ड. दिस विल कम ओनली आफ्टर रिपीटेटिव एक्शन. Answer writing is the only thing that mains 2024 demands. It doesn't matter that what all other knowledges which you have and things like that, it will not reflect it on the mains paper. Things which is going to reflect in your paper is how good you have understood the question, and with your knowledge how you have completed it timely and moved on to the next question. So your with every evaluation you will have a different strategy for some topic. कोई टॉपिक बड़े आपके स्ट्रेंथनिंग टॉपिक होते हैं, कई टॉपिक ऐसा होता है वीक होता है लेकिन लिखना पड़ता है, कुछ उसका जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको उसको डालना है. तो आंसर राइटिंग इज सच थिंग. इट्स जस्ट लाइक स्विमिंग के बारे में कितना भी बोल लो, until unless you don't swim, you don't jump into the pool, नहीं समझ में आएगा आपका. यू माइट बी वेरी गुड एट स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में राइटिंग एवरीथिंग, but it is UPSC and it is for a job and this is a competitive exam. So you have to see that you write at least best of your performance which you have done till date, and let's then hope that with that you are able to clear. Otherwise you have to enhance performance. You have to repeatedly write, और एक चीज पे आप repetitively self discipline के साथ काम करोगे, so it is going to enhance your performance definitely. That is no doubt about it.